नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं, कुछ वेबसाइट्स, लेख और नोट्स भी। इनके जरिए हम भगवान शिव के जो अलग अलग पहलू हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मतलब हमारा मकसद है उनकी दिव्यता, उनकी भूमिकाएं, जो प्रमुख कथाएं हैं और उनका आध्यात्मिक ज्ञान, उसके सबसे जरूरी हिस्सों को सामने लाना। हाँ बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से शिवजी के जीवन, परिवार, उनका निवास स्थान, उनसे जुड़ी कहानियां, शिक्षाएं, प्रतीक, इनके बारे में एकदम साफ और कह सकते हैं गहरी जानकारी निकाली जाए, ताकि एक स्पष्ट समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं शिव के मूल स्वरूप और उनकी भूमिकाओं से। कई स्रोत जैसे जनसत्ता और हमारे नोट्स भी उन्हें कल्याण का देवता बताते हैं, जिनकी पूजा से कहते हैं मुश्किलें दूर होती हैं। और ये बात भी काफी रोचक है कि वो सृष्टि, पालन और संहार तीनों के नियंत्रक माने जाते हैं। इसका जिक्र स्मार्ट शॉपी और विकिपीडिया में भी है। बिल्कुल सही। और शिव पुराण तो उन्हें परब्रह्म परमात्मा कहता है, मतलब वो ईश्वर जो गुणों के साथ भी हैं और गुणों से परे भी, सगुण भी निर्गुण भी, दिव्य और बिना किसी विकार के। वहीं अगर विष्णु पुराण देखें तो उसके अनुसार भी भगवान विष्णु के मस्तक के तेज से जन्मे हैं और ज्यादातर एक योगी के रूप में ध्यान में लीन रहते हैं। और वो समुद्र मंथन वाले कथा, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है, जब उन्होंने विष पी लिया और नीलकंठ कहलाए। ये एक तरह से दिखाता है कि कैसे घोर नकारात्मकता के बीच भी सकारात्मक रहा जा सकता है। ये बात ईशा फाउंडेशन के स्रोत में भी उभर कर आती है। हाँ, और उनके प्रतीक भी कमाल के हैं। मतलब सिर्फ सजावट नहीं है, वो उनके गहरे अर्थ हैं। जैसे उनका तीसरा नेत्र, जिसे त्र्यंबकम भी कहा गया है, यानी 3 नेत्रों वाला। विकिपीडिया और ईशा के अनुसार ये सिर्फ माथे पर एक आंख नहीं है, बल्कि ये ज्ञान और जो हमारी साधारण नजर है उससे परे देखने की क्षमता का प्रतीक है। सही कहा। और बाकी प्रतीक भी उतने ही गहरे हैं। जैसे सिर पर अर्धचंद्र, वो समय पर उनके नियंत्रण को दिखाता है। शरीर पर भस्म, वो वैराग्य की निशानी है और ये याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है ना, अंत में सब राख ही हो जाना है। और उनकी जटाओं से जो गंगा बहती है, वो पवित्रता और जीवन के निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। और सोचिए, उनके हाथ में त्रिशूल, ये सृष्टि, पालन, संहार की शक्तियों को दर्शाता है, या शायद प्रकृति के 3 गुणों, सत्व, रजस, तमस, इनके संतुलन को। डमरू, वो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि, सर्जन की नाद का प्रतीक है। गले में लिपटा हुआ सांप, वो कुंडलिनी शक्ति, यानी वो जीवन ऊर्जा जो हमारे भीतर मानी जाती है, या फिर ऊर्जा के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक हो सकता है। ये बातें विकिपीडिया और ईशा के स्रोतों में भी मिलती हैं। और नंदी बैल, वो तो उनका वाहन और धर्म का प्रतीक है। और कैलाश पर्वत, उनका निवास, जिसे कई स्रोत ब्रह्मांड का केंद्र भी मानते हैं। हाँ, और ये प्रतीक हमें असल में जीवन के गहरे सत्यों से जोड़ते हैं। जैसे आपने भस्म की बात की, वो हमें याद दिलाती है कि भौतिक चीजें अस्थायी हैं, तो असली खोज भीतर की होनी चाहिए। और तीसरा नेत्र, वो द्वंद्वों से परे सच को देखने की क्षमता विकसित करने की प्रेरणा देता है। शिव के कई रूप भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे नटराज, नृत्य के स्वामी। ये रूप ब्रह्मांड के लगातार चलते नृत्य का प्रतीक है, सृजन और विनाश का एक लयबद्ध, कभी न रुकने वाला चक्र। कुछ स्रोत बताते हैं कि ये जीवन के उतार चढ़ाव और जो विरोधाभास हैं, उनको कितनी खूबसूरती से दिखाता है। बिल्कुल, और लिंगम का जिक्र भी जरूरी है यहाँ स्रोत जैसे विवेकानंद और शिवानंद के विचार जो हमें विकिपीडिया से मिलते हैं, वो एक बहुत गहरा दृष्टिकोण देते हैं। उनके अनुसार लिंगम शिव का अमूर्त निराकार स्वरूप है। ये सिर्फ कोई भौतिक आकार नहीं, बल्कि अनंत ऊर्जा और क्षमता का प्रतीक है। ये जो सामान्य धारणा है, उससे काफी अलग और ज्यादा गहरी बात है। एक और मशहूर कथा रावण और शिव तांडव स्तोत्र से जुड़ी है। कहते हैं जब रावण ने अहंकार में कैलाश पर्वत उठाने की कोशिश की, तो शिव ने उसे अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया था। तब पीड़ा में रावण ने स्तोत्र की रचना कर शिव की स्तुति की थी। उनका परिवार भी वो कितना अनोखा है। सोचिए जरा, शेर जो देवी का वाहन है, और बैल शिव का वाहन, चूहा गणेश का वाहन, और मोर कार्तिकेय का वाहन, और गले में सांप। ये सब तो स्वाभाविक दुश्मन माने जाते हैं, पर शिव के परिवार में सब एक साथ संतुलन और एकता में रहते हैं। एक स्रोत में इसी विभिन्नताओं में एकता का एक अद्भुत उदाहरण बताया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और शिव के जीवन और स्वरूप से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जैसे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान लगाना और आत्मनियंत्रण रखना। ये उनके योगी स्वरूप से साफ झलकता है।
महाशिवरात्रि का त्योहार भी इसी गहरी सोच से जुड़ा है। इसे रात में मनाते हैं, जो अंधेरे यानी अज्ञान पर विजय का प्रतीक है। ये समय आत्मचिंतन, ध्यान और खुद को जानने का होता है। तो इन सभी स्रोतों को अगर मिलाकर देखें तो भगवान शिव का स्वरूप कितना विशाल और बहुआयामी है। वे विनाशक भी हैं तो परम कल्याणकारी भी, वे एकांत योगी भी हैं तो एक आदर्श गृहस्थ भी। कितना संतुलन है। हाँ, और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाती हूँ। जिस तरह शिव के परिवार में या उनके अपने ही स्वरूप में इतने विरोधाभासी तत्व एक साथ संतुलन में मौजूद हैं, क्या ये हमें आज की इस जटिल दुनिया में, जहाँ इतने अलग अलग विचार हैं, इतनी विचारधाराएं हैं, इतने विरोधाभास हैं, क्या ये उन्हें समझने और उनमें एक संतुलन खोजने की कोई नई राह दिखा सकता है? सोचने वाली बात है। स्वागत है सबदा। आज ਅਸੀਂ ਨਾ ਭਗਵਾਨ शिव ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ शिव जी त्रिमूर्ति ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। हाँ, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु ते शिव जी। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਤੇ शिव जी ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਭੌਤਿਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰ ਦਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਜ਼ਰ? ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਰ ਝਾਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਅੱਖ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ शिव जी ਨੇ ਕਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਤ੍ਰਿਅੰਬਕਮ ਵੀ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ 3 ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਨੀਲਕੰਠ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਲ-ਹਲ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ शिव जी ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਜ਼ਹਿਰ? ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਾਹ, ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਵੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ शिव जी ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੰਨ ਹੈ, ਜਟਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੰਗਾ ਨਿਕਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਸਮ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਗ ਦੀ ਖਾਲ, ਗਲੇ 'ਚ ਸੱਪ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਤੇ ਡਮਰੂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਸਮ ਹੈ ਯਾਨੀ ਸਵਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਗੁਣਾ, ਸਤਵ, ਰਜਸ, ਤਮਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਤੇ 3 ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਮਰੂ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਡਮਰੂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਾਦ ਬ੍ਰਹਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਟਰਾਜ ਰੂਪ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਨਟਰਾਜ। ਉਸ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਨਾਚ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਨਟਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਜਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ, ਫਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ 5 ਕੰਮ ਨੇ शिव ਦੇ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 5 ਕੰਮ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੁਆਂਟਮ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਊਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਨਾਚ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਨਟਰਾਜ ਮੂਰਤੀ 'ਚ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਅਪਸਮਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਭੂਤ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਪਤਨੀ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗਣੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਰਤਿਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਿਵ ਯਾਨੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਯਾਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੱਤਵ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਯਾਨੀ ਕਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ? ਮਹਾਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਮਤਲਬ शिव ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਾਤ। ਇਹ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਗਤ ਲੋਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ ਜਲ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦਾ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਣ ਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਉਤਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਜੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭੋ, ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਓ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮੁਕਤੀ ਯਾਨੀ ਮੋਕਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਊਰਜਾ, ਗਿਆਨ ਤੇ ਕੰਮ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਥਾ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੋਚਣ ਲਈ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਨਾਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ, ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਵ, ਖੁਸ਼ੀ, ਗਮੀ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਨਾਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ स्वीकार कर सकते हैं? इस बारे सोचना वाकई फायदेमंद हो सकता है। आज हम भगवान शिव की शख्सियत को ज़रा गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनके जो मुख्तलिफ पहलू हैं। हमारे पास कई ज़राए हैं, वेबसाइट्स, कुछ मज़ामीन, पुराने मत्न और जो आम बातें होती हैं वो भी। मकसद ये है कि इन सब से अहम बातें निकालकर शिव के किरदार, उनकी अलामतों और तालीमात को समझा जाए। जी हैं, ये वाकई एक बहुत दिलचस्प मौजू है। शिव हिंदू मत में मरकजी हैसियत रखते हैं, ये तो है ही। आम तौर पर लोग उन्हें सिर्फ तबाही का देवता समझते हैं, लेकिन ये तस्वीर यूँ समझिए कि अधूरी है। वो तो तख्लीक, तहफ़्फ़ुज़, रूहानी बेदारी, दुनिया से ला ताल्लुकी, उन सब चीज़ों की भी अलामत है। उनकी शख्सियत में ना ये जो अलग अलग बज़ाहिर मुखालिफ चीज़ें मिलती हैं, वो हैरान कुन है। अच्छा, तो इसी तज़ाद से शुरू करते हैं। उन्हें महादेव कहते हैं, यानी सबसे बड़ा देवता, और कल्याण का देवता भी, मतलब भलाई लाने वाले। ज़राए बताते हैं कि वो जिंदगी की मुश्किलें दूर करते हैं, लेकिन फिर वो संहारक भी हैं, तबाह करने वाले। ये दोनों बातें एक साथ कैसे चलती हैं? हाँ, यही तो शिव की गहराई है। वो सन्नार्क के तौर पर दरअसल जहालत को, अना को, जो मनफी ख्वाहिशात है ना, उन्हें तबाह करते हैं ताकि नई तख्लीक हो सके, रूहानी तरक्की का रास्ता खुले। तो ये तबाही एक तरह से तब्दीली है। उन्हें परम ब्रह्मा, परमात्मा भी माना जाता है। मतलब कायनात की जो असल हकीकत है, वो तवानाई, जिसे शिव होम कहते हैं। वो स्वयंभू है, यानी खुद से वजूद में आए, पैदाइश और मौत के चक्कर से आजाद, लाफानी है, अबदी। ये वाकई गहरी बात है। और ये जो इनकी पेचीदा फितरत है, वो इनकी अलामतों में भी नजर आती है। जैसे त्रिशूल, उसका क्या मतलब है? बिल्कुल, त्रिशूल सिर्फ एक वो हथियार नहीं है, ये तो अना, अक्ल और मन, उन तीनों पर काबू पाने की अलामत है। इसी तरह माथे पर जो तीसरी आंख है, वो अंदरूनी बेदारी, बातनी नजर और मनफी ताकतों को खत्म करने की कुव्वत उसको जाहिर करती है। सर पर चांद का होना वक्त के चक्कर पर, कायनात की ताल पर शिव के इख्तियार को दिखाता है। और वो गले में सांप, वासुकी और नीला गला,
नीलकंठ जो कहते हैं? जी, सांप जो है वो तवानाइयों के लिए हसासियत और उन पर काबू पाने की अलामत है, खास तौर पर कंदालिनी शक्ति की। ये जहर यानी मनफी तवानाई उस पर काबू पाने की भी निशानी है। इसका ताल्लुक विशुद्धि चक्र से भी है। और नीलकंठ वाली बात समंदर मंथन से जुड़ी है, जब उन्होंने जहर पिया था दुनिया को बचाने के लिए। ये हमें सिखाता है कि कैसे मनफी हालात में भी उनके असरात को जज्ब करके भी अंदर से मुस्बत और पुरसुकून रहा जा सकता है। जहर को अमृत बनाने वाली बात। वाह, ये तो आजकल की जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा सबक है ना। अच्छा, और डमरू और नंदी बैल? डमरू कायनात की तख्लीक की पहली आवाज, नाद, उसकी अलामत है, जबकि नंदी बैल जो उनकी सवारी है वो सिर्फ एक जानवर नहीं, वो तो एक अबदी इंतजार, मुकम्मल सुपुर्दगी और गहरे ध्यान मुराकबे की अलामत है। नंदी का इंतजार ऐसा है जिसमें कोई बेचैनी नहीं, कोई तवक्को नहीं, बस लम्हा मौजूद में रहना। यही तो असली मुराकबा है। शिव का खानदान भी बहुत ही अलग है। बीवी पार्वती यानी शक्ति, बेटे गणेश अक्ल के देवता और कार्तिकेय जंग के, और वो अर्धनारीश्वर का तसव्वुर जहां शिव और पार्वती एक ही वजूद में आधे आधे हैं। ये तो मर्दाना और जनाना तवानाइयों के कामिल तवाजुन की क्या खूब मिसाल है। सही कहा। और इस खानदान की सबसे खास बात वो है इख्तिलाफात में इत्तेहाद। आप सोचे जरा, शिव की सवारी बैल, पार्वती का शेर, गणेश का चूहा, कार्तिकेय का मोर और शिव के गले में सांप, ये सब कुदरती तौर पर एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन कैलाश पर शिव के घर में ये सब अमन से रहते हैं। ये दिखाता है कि असल तवाजुन वही है जहां बज़ाहिर मुखालिफ कुव्वतें भी साथ रहना सीख लें। अच्छा, शिव के मशहूर रूपों में नटराज का भी जिक्र आता है, रक्स के भगवान। जी हाँ, नटराज का तांडव रक्स सिर्फ तबाही का नहीं है, ये तख्लीक, तहफ़्फ़ुज़ और फना, इस पूरे कायनाती चक्कर की अलामत है। वो आग के एक दायरे में रक्स करते हैं जो वक्त और कायनात की हदें हैं, और उनके पाँव के नीचे जो बोना है वो जहालत की अलामत है। ये रक्स जिंदगी की हरकत, तवनाई, उसकी नुमाइंदगी करता है। तो इन तमाम पहलुओं से क्या अहम सबक मिलते हैं? जरा कई चीजों की तरफ इशारा करते हैं। बिल्कुल, जो आम तालीमात मिलती हैं मुख्तलिफ ज़राए से, उनमें कुछ अहम ये हैं: बुराई और नाइंसाफ़ी का मुकाबला करना, खुद पर काबू रखना, ख़ास तौर पर गुस्से पर, मादी चीज़ों से लाताल्लुकी पैदा करना, किसी भी चीज़ का जुनून, उससे बचना, अपने साथी यानी शक्ति उसका एहतराम करना, और सबसे अहम अपनी अना को ख़त्म करना, क्योंकि अना ही को सब मसलों की जड़ समझा जाता है। ये नीलकंठ वाले सबक से भी जुड़ता है ना। अना पर काबू होगा तभी तो मनफी को मुस्बत में बदल पाएंगे। आखिर में उनके ठिकाने कैलाश पर्वत और जो मुकद्दस मकामात हैं उनका भी जिक्र कर लें। कैलाश को तो कायनात का मरकज कहते हैं, एक बहुत पुरअसरार जगह। जी, और पूरे हिंदुस्तान में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं और अमरनाथ गुफा जहां कुदरती बर्फ का लिंगम बनता है, ये सब शिव से जुड़े अहम तरीन मकामात हैं। इन जगहों की ज़ियारत को सिर्फ ख्वाहिश पूरी करने का जरिया नहीं समझा जाता, बल्कि ये एक अंदरूनी सफ़र है, मुश्किलात पर काबू पाने, रूहानी पाकीज़गी हासिल करने का अमल। शिवलिंगम की पूजा की बहुत अहमियत है। तो कुल मिलाकर शिव की शख्सियत वाकई तजादात से भरी है, तबाहकुन भी, तख्लीकी भी, एक दुनिया छोड़ देने वाले योगी भी और एक खानदान के सरबराह भी। बिल्कुल, और ये ज़राए हमें यही बताते हैं कि उनकी कहानियों और अलामतें सिर्फ कस्से कहानियाँ नहीं, बल्कि ज़िंदगी और कायनात के बारे में गहरे फ़लसफियाना और रूहानी मायने रखती हैं, जो आज भी लोगों के लिए अहम है। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज की इस गुफ्तगू के आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि शिव से जुड़ा कौन सा तसव्वुर सबसे ज़्यादा मुतासिर करता है? क्या वो तख्लीक और फना का तवाज़ुन है, या नीलकंठ की तरह मनफी को मुस्बत में बदलने की सलाहियत, नंदी जैसा मुकम्मल ध्यान, या फिर तीसरी आंख की तरह अंदरूनी बेदारी की अहमियत? कौन सा ख्याल ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी या दुनिया को देखने के नज़रिए से सबसे ज़्यादा जुड़ता महसूस होता है? ये एक नुक्ता है जिस पर गौर किया जा सकता है। ओके,
Let's unpack this fascinating collection of sources you've shared about Lord Shiva. Yeah, there's a lot here. Welcome to the Deep Dives. We take the information you're curious about and we dive deep. Today, it's all about Lord Shiva. We've got news articles, religious sites, encyclopedias, quite a mix. A real range of perspectives, definitely. And our mission really is to pull out the key stuff, what he represents, why he's significant, the core ideas, without getting bogged down in, too much detail. Sounds good. And it's pretty remarkable how these different sources, despite their variety, often circle back to the same core themes about Shiva. Shows his importance, I think. Absolutely. So where should we start? Maybe his appearance, the physical representations, the blue throat, Nilakanta, that's always striking. Right, Nilakanta. The story, it's really powerful. During the churning of the cosmic ocean, this deadly poison, hala hala, came out. Yeah. And Shiva, basically to save everyone, he drank it. But he held it in his throat, which turned blue. Wow. So it's an act of self-sacrifice. Exactly. Huge self-sacrifice. But it's more than just a story. It's a metaphor, right? For handling negativity, transforming the poisons in our own lives, bad thoughts, tough situations, that sort of thing. And the practice of offering milk and water, is that connected? Like a cooling thing? Precisely. It's symbolic, yeah. A way to acknowledge that immense act, to sort of metaphorically soothe the burn of that poison he took on. It shows how ritual can tie into these deep narratives. Makes sense. Okay, what about the crescent moon, Chandrasekhar? The moon on his head, that symbolizes the cycles of time. Waxing, waning, birth, death, rebirth. And the connection between, the divine and the earth? Yes, exactly. Chandrasekhara, he who wears the moon. There might even be historical links there to older Vedic gods like Soma, associated with that ritual drink, and Rudra, who's often seen as a precursor to Shiva. Interesting. Then there's the matted hair, Jatin or Kapardhan. Gives off a very wild, ascetic vibe. Totally. The matted locks, they signify being outside of normal society, a kind of untamed, raw energy. And of course, the Ganga. The river Ganga flowing from his hair. Gangara. That's the one, such a powerful image. The life-giving Ganga finding its way to earth through Shiva's controlled release. Okay, the third eye, Triambakam. I always figured it wasn't just a physical eye. You're absolutely right. It's understood as more like another dimension of perception, wisdom, seeing beyond duality, beyond the ordinary. And like in yoga, that kind of inner sight. Exactly. It connects strongly to yoga, the evolution of energy, gaining deeper insight. And mythologically, it's the eye he used to, burn Kama, the god of desire, to ashes. Right, showing power over desire. Yeah. And Triambakam itself, it's interesting. In Vedic Sanskrit, one interpretation relates it to three mothers or Ambikas, adds another layer. Fascinating. What about the ashes he wears? Bhasma or Vibhuti? The ashes. They're a very direct reminder of impermanence, that everything material eventually turns to ash. So focus on the spiritual, not the temporary. Precisely. The importance of liberation, moksha, over getting caught up in the physical world. We also often see him pictured with a tiger skin and a serpent. Yes. The tiger skin he sits on, it symbolizes mastering that primal energy, conquering fear, controlling the raw power of nature. And the serpent? Vasuki. Vasuki, yeah. Worn like an ornament. There's a lovely story where Shiva blesses him after the ocean churning. Energetically, some link the serpent around his neck to the Vishuddhi chakra, the throat chakra. The throat again, like a filter. Kind of like a filter, yeah. Yeah. For negativity, wrong thoughts, harmful emotions, that kind of stuff. Similar idea to the blue throat holding the poison. Got it. And the Trishula, the trident, is iconic. To Trishula, yeah. It represents several key triads, most commonly his big roles. Yeah. Creator, preserver, and destroyer. The whole cycle. Or the three gunas, sattva, rajas, tamas. That too. The balance of those fundamental qualities that make up everything in existence. Purity, passion, inertia. Okay, what about the little drum, the damaru? Ah, the damaru. That's tied to Shiva as Nataraja, the lord of dance. Its beat is said to be the primal sound. The sound of creation. Yeah. And destruction. The very rhythm of the universe vibrating. I noticed some sources mention an axe and a deer, too. Yes, you do see that sometimes, especially in art from places like Odisha or South India. The axe, the parashu, might symbolize cutting off attachments. The deer, maybe agility, connection to the wild. And the Rudraksha beads. The Rudraksha rosary, that points to grace. Yeah. The simple life of a meditator, an ascetic.
They're used in meditation practice, a connection to that aspect of Shiva. Wow. Okay, so just through these symbols, the blue throat, the moon, the hair, Yeah. the trident, you really start to build this picture of, well, immense power, but also control, transcendence, connection to cosmic rhythms. Exactly. It's incredibly rich symbolism. So let's shift gears slightly. Let's talk about the places associated with him. Mount Kailasa, his home. Sounds so mystical. Kailasa, yeah. In the Himalayas. It's not just his home, it's mythologically seen as resembling a linga itself, like the axis of the universe. And the idea that ordinary people can't just climb it. Right. That adds to the mystique, the sacredness. It's seen as this incredibly pure, powerful, sort of inaccessible peak. And his Mount Nandi, the bull, always just sitting there. Nandi, yes. Yeah. He represents this quality of eternal waiting. Receptivity. Receptivity. Yeah, like Sadhguru explains it, Nandi just sits. Alert, open, but without expectation. It's a perfect metaphor for true meditation, just being present. That's a great way to put it. And the Ganas, his attendants. The Ganas, yeah, they live with him on Kailash. There's devoted followers, usually seen as benign, but fiercely protective. And Ganesha is their leader. Yes, Ganesha, Shiva's son. That's where his names Ganesha or Ganapati come from, Lord of the Ganas. Varanasi, Kashi. That city comes up a lot too. Oh, hugely important. Varanasi is considered Shiva's beloved city, a major, major pilgrimage site. Its whole identity is wrapped up with Shiva's presence. Okay, so we've looked at his attributes, his symbols, his places. What about the different forms or depictions? Nataraja, the Lord of Dance, seems huge. Nataraj is incredibly profound. You see Shiva dancing within that circle of fire, the Prabha Mandala. Representing time, cycles. Exactly. The endless cycle of creation and destruction. The dance itself is seen as the fundamental energy of all existence. All the forms we see are just like ripples in that dance. It's amazing how some sources connect that to modern physics. It really is. Fritjof Capra mentioned it, didn't he? The idea of subatomic particles as these energy dances. It suggests ancient intuition grasping something really fundamental about reality. Everything is dynamic, constantly moving, transforming. And there are different kinds of dances, Tandava and Lasya. Right. The Tandava is the powerful, intense, masculine dance, often linked to destruction, clearing away the old. And Lasya. Lasya is the graceful, gentle, more feminine dance associated with Parvati, with creation, with nurturing. They represent the two sides of the coin, really creation and destruction working together. What about Somaskanda? I wasn't as familiar with that one. Somaskanda is a lovely depiction. It shows Shiva with Parvati and their son Skanda, or Kartikeya. It's a common form, especially in South Indian art, from the Pallava period onwards. And Astamurti, Shiva in 8 forms. Yes, Astamurti shows Shiva embodying 8 core aspects of the universe. The elements like earth, water, fire, air, ether, plus the sun, the moon, and the individual soul, the sacrificer. It emphasizes how he permeates everything. Panchana, the 5-faced Shiva, that sounds deeply symbolic. Oh, absolutely. Panchana, or Panchabrahma. Each face represents one of his 5 major cosmic functions. Which are? Creation, Shrishti, preservation, Sthiti, destruction, Samhara, concealing grace, Tirabhava, and revealing grace, Anugraha. Wow. And 5 is a key number for Shiva. Think of the mantra on namah shivaya, 5 syllables. The faces are also linked to the 5 elements, senses, organs, showing him as the foundation beneath everything. Okay. Dakshinamurti, that came up too. Dakshinamurti is Shiva as the ultimate teacher, often shown meditating, teaching through silence or subtle gestures. Very important in the South. And Ardhanarishvara, the half-male, half-female form. A really powerful one. Ardhanarishvara visually represents the unity of Shiva and Parvati, the masculine and feminine Shakti energies as inseparable, interdependent, the balance needed in the cosmos. Right. And finally, the linga. Seems like there's some debate around its meaning. Yes, the linga. It's a core symbol representing the unmanifest divine, the creative principle, the source. The phallic interpretation. That interpretation exists, especially in some older Western scholarship. But it's been strongly challenged by many Hindu scholars and figures like Swami Vivekananda and Sivananda Saraswati. They stress it's not about a phallic cult, but a symbol of formless divine energy. Okay, that clarification is important. So shifting to his overall significance, clearly he's supreme in Shaivism. Without doubt. In Shaivism, one of Hinduism's major traditions, Shiva is the supreme being, the ultimate reality. But he's also part of the Trimurti. Yes, alongside Brahma the creator and Vishnu the preserver, Shiva is the destroyer, or maybe better put, the transformer. Transformer is a good word, because destroyer sounds purely negative, but it's more about clearing the way for renewal, right? Exactly.
It's dissolution of old forms so new ones can arise. It's a necessary part of the cycle. And that dynamic within the Trimurti, especially with Parvati as Shakti, his feminine power, really highlights this balance of cosmic forces. That relationship with Shakti, with Parvati, seems absolutely central. It really is. You see it in Art and Urshvara. Parvati, as Shakti, is the energy that makes everything happen. Without her, Shiva is sometimes seen as potential energy, quiescent still. The sources mention the month of Sawan being special for Shiva worship. Any particular reason? So on, yeah, it's considered a very auspicious month. There are different stories, often connecting it to Parvati's devotion to wind Shiva or to the churning of the ocean. It's a time of heightened devotion and special prayers for many. And his connection to yoga, he's seen as the first yogi. The Adi Yogi, yes, the originator of yoga, he's the ultimate meditator, and concepts like the third eye are all about the higher consciousness achieved through yogic practice. Let's touch on some origin stories. Emerging from a pillar of fire. Sounds epic. It is a classic story illustrating his infinite nature. Brahma and Vishnu were arguing about who was greater, and this immense, endless pillar of fire appeared. They couldn't find the top or bottom. Exactly. And then Shiva emerged from it, showing he was beyond their comprehension, beyond creation and preservation alone. There was another one mentioned too. From Brahma's forehead. Yes, another account exists. Different stories often highlight different facets of his power or manifestation. It's also interesting how his influence pops up outside of purely religious contexts, like on Western thinkers. Definitely. The deep ideas in Vedanta, which is closely linked to Hindu thought, really struck a chord with people like Thoreau and Emerson. Their philosophies about nature, the self, spirituality, you can see the influence. And even in pop culture. Avatar. Star Wars. It's fascinating, isn't it? The word avatar itself, meaning descent, comes directly from Sanskrit and the Hindu concept of divine beings coming to Earth. And the themes in the movie Avatar, interconnectedness, harmony with nature, certainly resonate. And Star Wars. George Lucas has openly talked about drawing inspiration from Joseph Campbell, who studied world mythologies, including Hindu epics like the Ramayana. You see echoes maybe Shakti in the Force, Brahman in the idea of an infinite universal power, perhaps even character archetypes like Hanuman, inspiring figures like Chewbacca. Yoda's name sounds a bit like Yoda, meaning warrior. It's about borrowing concepts and archetypes. Interesting connections. What about the practical side of worship? Shiv Puja Viti? Yeah, that refers to the specific methods and rituals for worshiping Shiva. There are prescribed ways, specific prayers, offerings, materials laid out in texts. They can vary a bit by tradition, of course. And lots of festivals dedicated to him. Oh, many. Mahashivaratri is probably the biggest, the Great Night of Shiva. But also Shravana month, Kartik Purnima, Pradosha evenings, Tej Bhairava, Ashtami too. Each has its own flavor and focus. Lastly, the sources mention some key temples. Yes, certain temples are incredibly significant. Somnath in Gujarat, the first of the 12 Jyotirlingas, these highly sacred Shiva shrines. And Kedarnath. Kedarnath, another Jyotirlinga, high in the Himalayas, part of the Chardam pilgrimage. Very powerful place. And the Nataraja temple in Chidambaram, Tamil Nadu. That's the cosmic dancer one. Exactly. Dedicated to Shiva as Nataraja, and uniquely linked to the element of ether or space. Very important site. So, wrapping this all up, what's the takeaway? This deep dive, it shows Shiva isn't just, a god with cool stories and symbols. He embodies really profound ideas. Totally. Ideas about transformation, how everything's connected, the nature of reality itself, destruction leading to creation, the need for inner awareness. And it's amazing how all these different sources, ancient myths, philosophical texts, modern interpretations, even those pop culture echoes, they all kind of feed into this richer, more complex picture. It really highlights the depth, doesn't it? How these ancient traditions have so many layers and continue to resonate. Definitely feels like we've peeled back some interesting layers today. For sure. And there's always more, Each look can reveal something new. Absolutely. So maybe something for you, the listener, to think about. How might some of this symbolism we talked about, that balance of destruction and creation, the idea of filtering negativity like the blue throat, the focus on inner awareness through the third eye, how might those ideas resonate in your own life, how you see the world? Just a thought to carry with you.